and welcome for the final time for this Tata IPL 2022 and time for the battle between the two top teams. Two finalists RR will take on Gujarat Titans at the beautiful Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. एक तरफ है राजस्थान रॉयल्स जो 2008 में पहले एडिशन में विनर थी और सामने होगी गुजरात टाइटंस जो अपने पहले ही साल में पहुंची है सीधा फाइनल में। कौन जीतेगा? क्या आरआर का एक्सपीरियंस काम आएगा या नई टीम गुजरात टाइटंस लेके जाएगी टाइटल? इन सब पे बात करने के लिए लेट मी इंट्रोड्यूस माय पैनलिस्ट फॉर द डे टुडे, निशांत, देवशीष सेन, जयदीप मुखर्जी एंड अभिजीत देशमुख. A warm welcome to all of you for the final time. Thank Thank you, you. Rima ji. Thank you. Thank you. स्टार्ट करते हैं. आज गुजरात टाइटंस की जर्सी पहनी है देवशीष आपसे कि सबसे पहले तो आज ऐसा लगता है एक फेस्टिवल है अहमदाबाद में. वो मैच तो लग नहीं रहा था आप अहमदाबाद में, लग रहा था कि आप कोई इंडियन कॉन्सर्ट देख रहे हो जहाँ पे पूरा हिंदुस्तान इन्वॉल्व है. Yeah, kya mahol tha. I mean, what an atmosphere, electrifying. Someone coming from Calcutta, we know what an atmosphere be like. It's, 1 lakh spectators being at the Eden Gardens, but now that is not the case. But Narendra Modi Stadium, it was chock-a-block. Means it was just electrifying. Means more than 1 lakh fans cheering and rooting and shouting, and with those with the closing ceremony with Ranveer Singh jumping and Ria Rahman, it was just superb. And what an atmosphere to play the finals. The IPL, a closing ceremony happening after 3 years. That's a long time, and you with COVID and with the difficulties, with so much of sorrows and griefs, and then you have a capacity crowd all coming in and cheering for the teams with their jerseys and banners. It's fantastic. And hats off to BCCI, Saurav Ganguly, Jai Shah, and everyone at the BCCI to make it happen. I mean, this is just a showstopper, I would say. एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट. और जिस बड़े अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया. जयदीप, द बिग न्यूज इज राजस्थान रॉयल्स हैव वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट. सॉरी, बिग मैच में आप हाई प्रेशर गेम में इट इज द राइट डिसीजन क्योंकि सेम विकेट है. आप चाहेंगे पहले बैट फर्स्ट कीजिए, बोर्ड पे रन्स डालिए, आपके पास जॉस द बॉस है. आपने पूछा होगा हाउ इज द जोश बटलर. Absolutely. I think runs on the board in a final, you want to bat without any pressure. You want the other team batters to feel the pressure. And I think this is the way to go. I can't, there have been some teams that have chased and won, but it's always runs on the board. And if Josh the Boss gets going, then game's over. But, stranger things have happened in this game. He's been unbelievable, but he's just a one ball away from getting out. So if that happens quickly, the real fun will be if he gets out early, he doesn't get a big one. Then who bails them out? That's what I want to watch. And if he bats 15, 16, 17 overs, then you know that it's going to be big, tall ask for Gujarat as well. They have the bowling. They have the bowlers to get people like Josh Butler and this team out. But this is as good as it gets. I think the two best teams in the tournament are in the final. And I just want both of them to come and really play well. Have an absolutely A game and let the best team win. एब्सोल्युटली. निशांत, जॉस बटलर की जैसे जयदीप ने बात की 824 रन्स, मतलब पर्पल पैच कहेंगे इसको आईपीएल. इसके लिए जॉस बटलर के लिए इस बार हुआ था. 4 सेंचुरीज ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है. आज क्या एक्सपेक्ट करेंगे? लॉ ऑफ एवरेज की हम हमेशा बात करते हैं लेकिन कई बार आप वो भूल जाते हैं. और जॉस बटलर अब एक मैच्योर बटलर निकल के आए हैं जो आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग नहीं करते, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, उसके बाद वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, वो डिस्ट्रक्टिव बटलर निकल के आता है. क्या आज हम सेम उम्मीद करेंगे या लॉ ऑफ एवरेजेस कुछ और दिखाएगा? I think if you look at the journey of Josh Butler, he has been probably one of the most improved. Like, his talent was always there, make no mistake. But the way he has changed his game over the years, especially in this format, is phenomenal. I was there in the आप बात कर रहे हो, मेरे को अचानक याद आ गया श्रीलंका के अगेंस्ट when he played that innings in the World Cup, T20 World Cup, शारजा में टर्निंग विकेट पे, और सेम सिचुएशन था. 20 रन 20 बॉलें टिल, और फिर 40 runs 40 balls, and in the second half of the innings he just went berserk, absolutely berserk. So and that's what we have seen, and the bleep in his form has already come. Like, अगर आप ध्यान से देखो तो बीच में 4-5 मैच थे जहां उन्होंने रन नहीं बनाए थे. और
एक बड़े प्लेयर की खासियत ये होती है कि वो बड़े मैचों में परफॉर्म करता है, व्हेन इट मैटर्स दे मैटर द Matters मोस्ट. the most. So Butler also must be knowing this very well. And but there is a flip side to it as well. If you look carefully, the entire tournament, the way Rajasthan Royals have gone about it, uh, to reach here, they have won 9 plus to 11 games. Out of those 11 games, 6 have been single-handedly won by जॉस बटलर. 4 में तो 100 है उनका, और 2 में कुछ True. 80s और 90s है. So that means 60% of their success has been dependent on Josh Butler. 60 to 70%. And that's a phenomenal thing in a sport where you have 11 players. तो अगर आप 11 मैच है तो सबका कंट्रीब्यूशन 10-10% होना चाहिए. 20-25 हो सकता है फॉर्म के हिसाब से, उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ एक 70% बल्क ऑफ मैच विनिंग एबिलिटी एक आदमी के यहाँ से आ रही है. और दूसरी तरफ अगर आप गुजरात टाइटंस को देखो तो देर इज नो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस. ऐसा नहीं लगता कि ये हार्दिक पांड्या का टूर्नामेंट है या ये राशिद खान का टूर्नामेंट है. कोई भी उनके यहाँ मैच जिता रहा है. पिछला मैच डेविड मिलर ने जिता दिया. तो आई थिंक इट्स अ बैटल बिटवीन ओनली जॉस बटलर. इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, जॉस बटलर स्टैंड्स इन द वे ऑफ गुजरात टाइटंस टू विन दिस टाइटल. इट्स एज सिंपल एज दैट. बिल्कुल, और यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था अभिजीत आपसे, और काफ़ी अच्छे से इलैबोरेट किया है निशांत जी ने कि 60 टू 70% जो मैच जीते हैं राजस्थान ने, वो क्रेडिट आप दे देंगे जॉस बटलर को। यानी कि अगर आप गुजरात टाइटंस के खेमे में हैं, आप उनकी विकेट ले लेते हैं, तो आप 70% मैच में हैं। और एक बैटल है, बड़ा इंटरेस्टिंग बैटल है बिटवीन बटलर एंड राशिद खान। अगर बटलर सेट हो जाते हैं, डेफिनिटली वो एडवांटेज देते हैं राशिद खान की बॉलिंग, लेकिन जो राशिद खान का सक्सेस रेट रहा है बटलर के अगेंस्ट, वो बहुत अच्छा है। तो क्या हम शुरुआत में ही बटलर को राशिद खान को देख सकते हैं अगेंस्ट बटलर? डेफिनेटली आई गेस इम्पोर्टेंट मतलब फाइनल है. आई थिंक आप चाहोगे कि बटलर जल्दी से जल्दी आउट हो जाए. आई रिमेम्बर 2011 का जो फाइनल था बिटवीन सीएसके आरसीबी, क्रिस गेल काफी बहुत अच्छे फॉर्म में थे. महेंद्र सिंह धोनी ने आर अश्विन को लाके वो जल्दी से विकेट ले ले. तो आई थिंक आप डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे पहला या सेकेंड ओवर में. आई वोंट बी सरप्राइज कि राशिद खान आ जाएंगे और करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि जैसा निशान ने भी कहा कि 70% कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जोस बटलर का. सो बटलर ही इज इन मैन इन द फॉर्म, और चाहेंगे आज थोड़ा don't want to miss scores. I think Butler is ultimate. I mean, क्या कहेंगे उनके बारे में, इतनी बैटिंग अच्छी है, तो डोंट लुक लाइक कि वो आसानी से अपना विकेट देंगे. जॉयदीप, आपके क्वेश्चन है, बी का फॉर्मर क्रिकेटर, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एनसीएबी, विकेट की थोड़ी सी बात करना चाहूंगी. पिच आज सेम विकेट पे मैच खेल रहे हैं, लेकिन आज ग्रास थोड़ा कम है. एक बदलाव देखने वाला गुजरात टाइटंस की टीम है. लोके फर्गुसन आए हैं आज इन प्लेस ऑफ अल्जारी जोसेफ. अच्छा बदलाव, ये एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिलेगा और वहां पे लोकी फर्गुसन का फायदा उठा सकते हैं. See, I also feel that the wicket, see, even in Calcutta, the two games were on the same wicket, and it didn't make much of a difference. So, it's just these wickets are so good that one day really doesn't make that much of a difference. And yes, that is probably one of the reasons why they decided to bat first, because they probably feel with less grass, it might become a bit slower, it might come off the bat a bit slower. And also, they feel that, they want Josh Butler, who likes the ball coming onto the bat, to bat first. They want him to get the best of the conditions for batting, because he really likes it when the ball comes onto the bat, and they want to give him as much of that, because the more you play on this, the slower it will get. But I still feel it'll be a very, very good wicket. We saw in Calcutta 2 games on the same pitch, and we saw how good the pitch was on the second day. I sometimes feel the pitches next to the ones you're playing on takes the most battering, because of all the running you do with the spikes and all that, with the batters and the non-strikers. So it's actually True. the pitch. If we play a 5-day game on this pitch, we play a 4-day game on this pitch, and it plays out fine. So if it's a good deck, it'll hold up, and this will hold up. This will be a superb wicket. And I think the changes are also on form. The changes are maybe some niggles here and there. Changes are all on the strengths and the weaknesses of the opponents.
So a lot of times, a lot of bowlers bowl well to a few batsmen, don't bowl well to a few batsmen. So all those stats are with them, and then that pans out in making the decision. आई टोटली एग्री विद यू कि हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल सकता है और मिलेगा भी अंटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा कोलैप्स ना हो जाए, पेस बैटरी जो है गुजरात टाइटंस की वो अगर डीरेल कर दे राजस्थान रॉयल्स के बैटर्स को, वो एक देखने को मिल सकता है। लेकिन देवाशीष आपके पास आती हूँ। एक तरह से गुजरात टाइटंस को हम होम टीम कह सकते हैं क्योंकि अपने घर में खेल रहे हैं अहमदाबाद में। उनको एडवांटेज है या फिर उस टीम को आप एडवांटेज देंगे जो ऑलरेडी यहाँ पे पहले खेल चुकी है रीमा जी, आरआर और जिस होम तरह से टीम खेली? है वो, होम टीम है वो, कप्तान भी अहमदाबाद से है। बट लेकिन देन क्या आप उनको एडवांटेज देंगे जो ये मैच खेल चुके हैं, उनको एडवांटेज देंगे? जो खेल चुका है, क्योंकि आई राजस्थान रॉयल्स एग्री, जो खेल आई चुका है एग्री। ऑलरेडी एक मैच, बट देन ये ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स तो प्रैक्टिस भी नहीं किया हुँ, अहमदाबाद में, एक्सेप्ट फॉर दैट वन प्रैक्टिस सेशन लास्ट नाइट। कोई भी हुँ, प्लेयर्स राइट फ्रॉम डेविड मिलर एंड Rashid Khan, they had hardly practiced on this turf. But then, having said that, I think it's a very good in the hindsight. It's a very good toss to lose for Gujarat Titans because they have so many finishers in their side. The likes of David Miller, who has been in outstanding form. You have Rashid Khan. You have Rahul Tewatia, who has not yet been, who has not batted as well in the last match, not even required. So I think the Gujarat Rajasthan Royals will have to bat out of their skins, have to post हुँ, a big total if they have to make it a their strategy would be bat it out in the final. हुँ, But then I would say that Gujarat Titans looks slightly have an edge because if they can get in early inroads, maybe perhaps get in get Josh Butler out. You never know. You never know. So I would say it's a good toss to lose for Hardik Pandya. और हार्दिक पांड्या ने बोला भी है कि टॉस अगर वो जीते तो पहले बॉलिंग करते क्योंकि चेजिंग उनकी ताकत है। अभिजीत यही दे आप देखना चाहते हैं कि दोनों टीम को अपनी ताकत मिल चुकी है। राजस्थान रॉयल्स बैटिंग करना चाहते थे, वो उन्होंने किया। हार्दिक पांड्या बॉलिंग करना चाहते थे, वो उनको मिला। चेस करना पसंद ज़रूर है लेकिन अगर राजस्थान की बैटिंग की ही बात करें, इफ बटलर आज नहीं चलते देन व्हाट? क्या आपके पास उस सवाल का जवाब है? क्या संजू सैमसन से आज हम फाइनली वो कैप्टन नॉक देख पाएंगे? इम्पैक्टफुल पारियां वो डेफिनेटली खेल रहे हैं, उसके लिए कोई दो राय नहीं है, लेकिन कैप्टन नॉक बड़ी इनिंग, क्योंकि बटलर छोटी इनिंग नहीं खेलते, वो बड़ी इनिंग खेलते हैं, मैच बनाते हैं, मैच जिताते हैं। आई थिंक इट्स नॉट ओनली संजू सैमसन। आज शायद ऐसा लग रहा है कि ज्यादा रन्स बनेंगे। 180 तो मैं मान के चल रहा हूँ कि पार रहेगा इस विकेट पे, हम्म, लेकिन एवरीवन हैज टू कंट्रीब्यूट बिकॉज अगर मतलब सैमसन भी थोड़ा खेल लेंगे, शायद ऐसा हो सकता है कि 5-6 विकेट्स भी गिर जाए इस विकेट पे। तो हम्म, एवरीवन हैज टू कंट्रीब्यूट बिकॉज आज फाइनल है, आज तो जी जान लगानी है। तो आई थिंक वो कहीं हम्म, ना कहीं केमियो सबका जो आएगा वो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, ये जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि सैमसन जो 60-70 खेल रहे, शायद आज बड़ी नहीं खेले, तो कैप्टन हम्म, स्नॉक यस एक्सपेक्टेड उनका। बट आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट लुक्स टू मी, आई मीन ऑफ कोर्स गुजरात टाइटंस इज हैविंग एडवांटेज, टीम तो काफी उनकी ऑलमोस्ट परफेक्ट लग रही है। बट आई थिंक जो एक एक्स फैक्टर इस बार राजस्थान रॉयल्स के साथ है वो शेन वॉर्न का, आई थिंक दे आर प्लेइंग फॉर दैट। तो आई थिंक वो हम्म, एक एक्स फैक्टर रहेगा। और मुझे कहीं लग रहा है कि जो फर्स्ट मैच हुआ था प्ले ऑफ कोलकाता में, तो राजस्थान रॉयल्स उससे काफी उन्होंने कुछ सीखा होगा, क्योंकि हम्म, आज ऑलमोस्ट सेम रहेगा, क्योंकि उस मैच में भी राजस्थान ने पहले बैटिंग की थी और गुजरात ने आराम से चेस कर दिया। तो दे वुड नो कि आज शायद लीग स्टेज में भी राजस्थान हारी है गुजरात से। सो दे नो हम्म, कि कहाँ पे उनका वीकनेस है, कहाँ अभी दे शुड डू। बिकॉज ये आज लग रहा है कि वापस हाई स्कोरिंग गेम होगा, तो दे वुड नो कि गुजरात टाइटंस कहाँ पे लैग करेगी। आई थिंक अगर मैच की बात करें तो फंस सकता है काफी बैटिंग एंड फर्स्ट इन द फाइनल्स। आई थिंक एडवांटेज रहता है मुझे ख्याल से, क्योंकि जो अगर आपने रन्स बना दिए तो इतना इजी नहीं जाता है फाइनल्स में टू चेज हम्म। डाउन। एब्सोल्युटली निशांत, अभिजीत ने कहा और मैंने भी सुना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजू सैमसन ने कहा था कि दे वांटेड टू विन फॉर शेन वॉर्न। इमोशनली अटैचमेंट, एक इमोशनली आपके पास एक मोटिवेशन है, लेकिन क्या आज 14 साल का वनवास जो होगा आरआर का वो टूटता नजर आएगा? 2008 में जीते थे, क्या वो ये टीम तैयार है? तैयार है हम कह सकते हैं क्योंकि फाइनल पहुंची है, लेकिन बड़ा मैच है आज। जॉस बटलर के अगर नहीं चलते फिर क्या? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। सबसे पहले तो आई थिंक दैट मोटिवेशन टू प्ले फॉर दैट लेजेंड
will be huge, and Hmm. it will definitely, spur them. It will definitely motivate them. Hmm. But I think I personally feel that by after winning the toss and giving Gujarat Titans to chase, I personally feel that Rajasthan Royals have squandered the advantage little bit, because True. Gujarat Titans as a team, you see, and like Debashish pointed out very well, that they have finishers. So now Hmm. look at this, like how this game will pan out. If Gujarat gets a blistering start, anything less than 200, anything less than 200, on a given day, anything can happen. But GT will think they can go and chase it. They will, because they have the template to do it. ऊपर Hmm. से 40-50 रन की पार्टनरशिप रिद्धि और शुभमन ने कर दी, नीचे उनको मालूम है, दे हैव हार्दिक पांड्या, दे हैव राहुल तिवतिया, दे हैव डेविड मिलर, राशिद खान. Now, if you had put Gujarat Titans to bat first, then they would have been in that position. Ki how much is enough on this wicket? How many runs you need Hmm. actually to win a game? But when Gujarat will come to bat, they will know exactly their target, and they also know. The bigger question over here is, has Rajasthan Royal got a B game? A B game or a C game? A B game is without Butler. Hmm. If Butler gets out in the 5 overs, also not, we should not forget that the most successful team in the power plays while taking wickets is Gujarat Titans. They have taken the most amount of wickets in the power plays in the first 5-6 overs. Hmm. So if that happens और आपके फ्रेम से मधुमक्खी निकल जाए, तो वो लगता है मैच देखने मेरे साथ बैठना चाहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है उससे। लेकिन तो प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज दैट अगर गुजरात के पास ऐसा नहीं है कि उनके पास प्लेयर नहीं है, अगर वो पहुंचे हैं इस दूर तक, तो क्या पता संजू सैमसन 100 बना दे। हुँ, कोई बड़ी बात थोड़ा है, मतलब कोई भी रन बना सकता है। टैलेंट है उनके लेकिन पास। हाँ, द प्रॉब्लम व्हाट वी नीड टू फिगर आउट टुडे इज इन अ क्रंच गेम लाइक दिस, इन अ फुल पैक्ड हाउस, in front of so many people, probably for some of these players the biggest match of their life. Do they have a game without Butler? Can हुँ, they think of putting 200 or 190 without Butler? If they are able to do that, अगर बटलर ने रन बना दी फिर तो खत्म हो गया ना बात, मतलब चलो फिर तो दूसरी बात हो गई ना कि चलो जी अब तो हुँ, आगे बढ़ो, मतलब वो तो हो गया, दैट टेम्पलेट इज सेट. बट डू दे हैव अ टेम्पलेट विदाउट बटलर? दैट इज हुँ, व्हाट विल बी टेस्टेड टुडे. And I think by giving the chase to Hardik Pandya, they have actually given them a little bit of advantage. I would like to know what Joyda thinks about it, actually. जॉयदा? I said initially also that Josh Butler is the key. If he bats what he just said, Nishant, that those were my opening lines, that if he bats 15, 16, 17 overs, it's game over. Yeah, for me, that हुँ, is the challenge. I think what Rajasthan Royals must be thinking is that let us bat first. We've got a gun bowling attack. Let us हुँ, get whatever we can. Let's see that if our bowling can put them under pressure. That's what they are thinking. But like Hardik said, he also wants to bat second. So this is everybody is happy with the toss. Everybody is happy with हुँ, what is going on. So it's this game is started on a very good note. Nobody can crib, say that, oh, we wanted to bat first or we wanted to bowl first. You've got what you wanted to do. Everybody's plans are in place. So now, one, yeah, like you rightly said, Josh Butler gets going. Does Gujarat have the strength to come and bat that out? Secondly, if Josh Butler gets out early, does Rajasthan have what to get 170, 180? We saw in Kolkata, 200 plus was a winning total. We saw 180 was chased easily with 360. 16 in the last over is not easy. I know it happened, but it's not easy. You give many bowlers 16 in the last over, they'll take it. हुँ, Because it was three sixes in a row, it made it easy. It looked like a walk in the park, but it wasn't. I was at the ground. And before the 20th over, even the everybody was in the bowlers here telling him this what to do. The non-strikers were talking to the striker. There was gloves flowing in, although 5 pairs of gloves changed in 2 minutes with no not a ball being bowled. Water was coming in, a lot of advice was coming in. So it wasn't a walk in the park. When the three sixes happened, it felt like it was a walk in the park, but it Even wasn't before that. even 16 in the last over in any other ground is not easy. 16 in the last over in Eden Gardens is always easy. Whether it is Carlos Brathwaite, whether it is David Miller, कुछ Yeah, है but वो that's twice. ईडन But But गार्डन that's I में. twice in about
That's ईडन twice in गार्डन 100. You That's still twice need. in 100 T20s. ईडन Two गार्डन games. को ईडन गार्डन को कुछ शिफा है ऐसे No, I agree with that. But the point I'm trying to हीरोज make here, क्रिएट करने का. point I'm trying to make here is that even the 180 game wasn't a given. Till the last over, we didn't know where it's going to go. So runs on the board is an issue. When it's a knockout game, and this is as big a knockout game as you get in the IPL, this is it. So दादा मैं आपको sometimes runs on the board, when KKR won in 2012, runs on the board, 190 plus, you lost Gautam Gambhir early, you were looking down the barrel. Yes, Manvinder Bisla, Jack Callis, Manoj at the end, it was magic. But magic doesn't happen every day. बट दादा मैं आपको बता रहा हूँ मेरी जो ईडन गार्डन्स में वन डे आई वांट समवन टू राइट अ बुक ऑन ईडन गार्डन्स हाउ इट हैज गिवन so many fairy tale stories to no other ground especially in India has given. Look at from Harbhajan Singh out of nowhere getting that hat trick in 2001 and changing the course of that series after follow on. Like True. that script is only a fairy tale. तो वो जो Yeah. कार्लोस ब्रॉथवाइट ने किया बेन स्टोक्स के अगेंस्ट एक ओवर में 24 रन ये कुछ आपके गंगा का जो पानी है ना ये उसका कुछ असर है. True, I agree. I remember one game, Sri Lanka got 310 or something. We were 315. Everybody was very worried. India 0 for 1. Then they won by 9 wickets. Virat Kohli 115 not out, Gautam Gambhir 115 not out. Yeah. So है नहीं वो. Strange thing happens at the evening grounds. I agree. But like I said, this is, for me, Josh Butler, I feel Gujarat will attack Josh Butler. They'll try to get him out. Yeah. Because they know they don't mind giving him few runs early on. They will say, जयदीप थोड़ी नजर आप गुजरात की बॉलिंग पे भी डाल दीजिए उसके हिसाब से बात कीजिए क्या आपको लगता है कौन से बॉलर्स अटैक कर सकते हैं किन बॉलर्स को ज्यादा जॉर्ज बटलर को बॉलिंग डालनी चाहिए एक बार आप टीम में नजर डाल के थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज. Yeah, if we just look at the teams and we go with see, Rashid has not bowled in the power play. He doesn't normally bowl in the power play. Will Hardik Pandya take the risk? If he goes, gets off to a flyer. If he's playing normally, if he's 18 balls 24, he might not. But if he's 18 balls 42, sorry. If Rashid is bowling in power play, that means Gujarat Titans are in for a deep trouble. Yes. Not really. At times आप कह सकते हैं कि आप थर्ड पे जो बॉलर है नंबर 3 का बॉलर है उसमें राशिद खान को एक ओवर डलवा सकते हैं. जरूरी नहीं कि पिटने के बाद ही स्पिनर आएगा. आजकल हम देखते हैं स्पिनर तो शुरुआत भी करते हैं. नहीं वो नहीं बॉल करेगा वो तभी बॉल करेगा अगर 4 ओवर में 50 रन हो चुके हैं. Like I was saying, if he's 18 balls 24, 26, he might not bowl. But if 18 balls 42, he might want to bowl. Yeah. Because this is exactly how Gautam Gambhir used to in Lara. It's like a lifeline. First over 7, no problem. Second over 10, no problem. Third over 15, Sri Lanka 1 over 2 runs. Back to century has been prevailed. Again, somebody else bowls 8 overs. Again, somebody bowls another 18 run over, another 14 run over. Sri Lanka 1 over 2 runs, 1 wicket. Again, back. Yeah. So वो प्लास्टर लेके घूमते रहते हैं लोग जहाँ जहाँ क्रैक होता है प्लास्टर लगा देते हैं वैसा. So he's a lifeline. But also you got to realize that Rashid Khan, if he bowls to Josh Butler in the power play, his chance of getting him out of the power play is also less because there are only 2 fielders outside the circle. So he's an offensive weapon as far as Josh Butler is concerned, not a containing weapon. You don't want Rashid Khan to bowl 3 overs in the power play to Josh Butler and give 20 runs and not get him out because then he'll go berserk on somebody else when Rashid Khan's overs will be gone. He wants to bowl with him with 5 people outside the circle and try and get him out. That is where the chances of getting it out is more. Unless it really goes outside the syllabus, he will not bowl in the power play. But they've got bowlers. As a cap, Sami. Or why can't maybe R. Ashwin also they can try in the power play. He can also bit a supply. R. Ashwin तो राजस्थान का हो गया ना? नहीं साई किशोर. साई किशोर. Yeah, Sai Kishore can come and bowl. He's a very, very, he really knows how to bowl. Yeah. I mean, anybody who his economy in T20 in the Mushtaq Ali career is below 6. Like that's phenomenal. But Joydeep, my question is, will you take the gamble in the final or you will go with the same game plan? No, you take the gamble in the final. You go give him something he doesn't expect. You start normally. You start with Sami and Ferguson. Then you get has he ever played Sai Kishore? He hasn't. And he's a wily bowler. He's tall. He's got bounce. He doesn't turn the ball a lot. He's got a beautiful pace that he bowls at. He's not too quick. See, Josh Butler and all, most spinners under the gun get quick under him. And that's what he wants.
Hmm. If somebody can bowl slow, and Sai Kishore can do that. He got caught Hmm. in the last game, came back and got him out. That's why he was going like that. He has Hmm. that ability. I Go think ahead. the key question for here for Hardik Pandya would be if Josh Butler gets going. I think as a captain, he has to decide how he wants to use Rashid Khan. He wants to use him as a containing bowler. Like, is he happy? Rashid Khan goes for 4 overs, 24 runs, no wickets, or he is happy with 4 over, 36 runs, 40 runs, 2 wickets, or 3 wickets. That Hmm. is a question Hardik Pandya will have to answer if Josh Butler gets going. Yeah, but if 424, if he does, then then somebody else is going at 450. Two But people are going at 450. that has happened. Na? In this IPL, we have seen that one No, that's the spell. reason why. That's the reason why I feel he will not bowl in power play Yeah, unless I personally feel that if Rashid Khan has bowled in the power play, that means Gujarat Titans are in deep, deep trouble. umpires out. Rimaji. Yes, Debashis, आप कुछ कहना चाहते थे? फटाफट से wrap up No, करेंगे. I don't think there's a need of a change for Gujarat Titans because Shami, if you look at the stats, 15 matches, 12 wins for Gujarat Titans. Shami has taken wickets in 11 of those matches in power play, and Gujarat has won 11 matches. So that will be the Hmm. key for Gujarat Titans when you have someone like a Mohammad Shami. He's a gun bowler on any day. Hmm. Any day he's a gun bowler. He's the best bowler apart from Jasprit Bumrah. So and it's a very good decision to have Lockie Ferguson today because this has Hmm. some bounce on the turfs and I know he's quick also. So that will be a good and Alzare Joseph went for a lot of runs in the last Hmm. qualifiers at Eden Gardens. So that's a good Hmm. move on the part of Gujarat Titans to have Lockie Ferguson. And this bowling lineup, the Gujarat Titans fast bowling lineup looks very good with Yas Dayal, Lockie Ferguson, and Mohammad Shami. It's very good, very good. देबू के And अंदर Lockie का Absolutely. Ferguson plays देबू the के World अंदर का Cup बेंगोल finals. दम He निकल knows रहा है. how to bowl under pressure. Has played Hmm. World Cup finals, has played in tough matches. So you need Hmm. somebody who's played an IPL final last year, so he knows how to take pressure in the finals. और गुजरात टाइटंस के पास वो एक्सपीरियंस है, नई टीम है लेकिन प्लेयर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन क्या पेस एक्स्ट्रा बाउंस तंग करेगी राजस्थान के बैटर्स को, ये तो वक्त ही बताएगा। चलने से पहले फटाफट से एक छोटी-सी प्रेडिक्शन ले लेते हैं जल्दी-जल्दी। फटाफट से निशांत, गुजरात टाइटंस और आरआर, गुजरात शॉर्ट एंड टाइटंस. स्वीट, गुजरात टाइटंस। टाइटंस. देवाशीष आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। Gujarat अभिजीत, Titans. Rajasthan Royals. वाओ! जयदीप, Gujarat. गुजरात। सो रीवा जी, आप जो अपना वोट भी मेजॉरिटी दे दो ना, अपना वोट भी देखिए, दे मैं दो. मैं गुजरात के साथ जाऊँगी। मुझे लग रहा है कि वो राजस्थान वन मैन आर्मी है इस टाइम, वो चल गई तो डेफिनिटली आरआर लेके जाएगी, फिर हमारा बात करने का मतलब ही नहीं है। लेकिन जहाँ पे डिफरेंट मैच विनर्स हैं, तो आई विल गो विद गुजरात टाइटंस। तो चलिए अब चलते हैं मैच की तरफ। क्या आरआर दूसरी बार चैंपियनशिप जीतेगी? क्या वो 14 साल का वनवास तोड़ेगी या फिर आज एक इतिहास रचा जाएगा और नया नया विनर, नया चैंपियन निकल के जाएगा? टिल देन टेक केयर, एन्जॉय द मैच एंड विल कैच यू अप आफ्टर द मैच इन पोस्ट मैच शो। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you.